Yes, ma'am. Okay, so this is about an army of principles can penetrate where an army of soldiers cannot. Again, a very interesting topic, and a lot can be written in this essay. And मैं आपका brainstorming देख रही थी, which is very good. You have written about different forms of examples like administration, social, and can you please scroll it down? About political examples, about violence and tribals, and also a place where army of men is also needed and not army of principles. Army of principles are not enough. So in a way, you have addressed it in a, you know, in a wholesome manner. But I would want to have more inputs from people here. Can you please go back to the topic? So what army and principle, army of principle mean to you? Anyone can give their inputs. Army of principle. Yes, ma'am. It means values. Hmm. It's more like accept arms and those forceful thing. All the other thing Hmm. will come under Values principles. like honesty, values like non-violence, values like tolerance, values like uh, what all values Integrity, you can think of? Sorry, integrity, integrity, yes. नोन नोलेंस के सभी वैल्यू जो हैं सात हाँ, आठ। सो मेक श्योर जब जब भी जहां पे भी आप एग्जांपल दे, वहां पे आपको ये शो करना है कि सेकंड वाला पॉइंट जो है, सेकंड वाला जो पार्ट है, वो वर्क नहीं करेगा. आर्मी ऑफ सोल्जर विल नॉट वर्क देयर एंड आर्मी ऑफ प्रिंसिपल विल वर्क. ओके, so I think your examples are apt. You have wrote about Bangalore IPS Chetan Singh. यहाँ पे army of soldier will not work. Eliminate, sorry, can you just stop for a bit, for a moment? To eliminate the evil social. About child marriage, yes, army of principals will work and not the army of soldiers. I think Assam का example दिया जा सकता है. अभी यहाँ पे arrest हो रहे थे बहुत सारे. यस मैम, वो लॉ An आए थे example this week. Yes. You wrote about corruption. Again, a moral measure can be taken than more of army of soldiers will again not work here. So जब भी आप example दे, you have to explicitly write कि यहाँ पे army of soldier will not work and army of principal will work. ओके मैम. And another thing, that the why of the topic, उसकी भी brainstorming होनी थी. क्यों आर्मी ऑफ प्रिंसिपल वर्क करते हैं और आर्मी ऑफ सोल्जर्स फेल हो जाते हैं? ओके. So you can you think of some points right now? Yes ma'am, because it changed the heart and it changed the conviction. These thing means it changed the soul, and from the principle people do whatever people do, they do from their Internal from their motivation genuine आता है. heart. Yes ma'am. And why और फिर प्रिंसिपल army of soldiers can हाँ, जी ये है जी बोलिए एक्सटर्नल बोलिए. फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स में may sometime works and always रूट कॉज ये एलिमिनेट नहीं कर सकता है, एक्सटर्नल कॉज जो भी है. ये जो चीज आपने बोली अभी, ये आपके ऐसे का हार्ट होना चाहिए. You should write it. ओके. So that this thing is missing from your essay, right? यस मैम. Also, you wrote about places where army of principal may not work and you need army of soldier. You can also think of examples where you need both of them, or some examples where neither of them work, if you Okay. can think of these examples. But addressing the second part was more than enough, I think. Okay ma'am. So the external thing, the external internal thing, and you can come up with more arguments why army of principal works where army of soldier fails. Okay ma'am. Okay. Or anything that you want to ask me? And it's good that you have brainstormed this essay, and I would suggest all of you to do it because it helps a lot. ओके मैम. तो मैम, जब भी हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो फिर टॉपिक लिखने के बाद फिर तुरंत ये पेस्टल अप्रोच ही याद आता है, पेस्टल फिर अप्रोच कुछ से याद ही नहीं पहले आता है. आप क्या करिए, पहले टॉपिक से कीवर्ड्स को एक बार देखिए.
Okay. आर्मी, आप आर्मी के बारे में भी थोड़ा सोच सकते हैं, व्हाट आर्मी मीन्स हियर। फिर आर्मी ऑफ प्रिंसिपल्स, इसके बारे में चार पांच पॉइंट्स में लिखिए कि क्या होता है आर्मी ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर यू, एंड व्हाट इज आर्मी ऑफ सोल्जर्स फॉर यू। Giving a punishment in school is also like an army of soldiers because that's an external thing. Is Okay, it? ma'am. Yes, ma'am. Do you think that giving punishment in school is army of soldiers? सो Mm, थिंग्स लाइक दैट यू कैन ब्रेनस्टॉर्म, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। पहले आपके सारे कीवर्ड्स को आप सिंपलर फॉर्म में डिवाइड करोगे, फिर उनकी एक सिंपलर डेफिनेशन आप उस फॉर्म से ही डिराइव कर लोगे अपने ऐसे में। उसके बाद लाइक आई एक्सप्लेन लास्ट टाइम आल्सो, you'll try to prove this thesis statement with some set of examples, not exactly pestle approach, ये थोड़ा सा it's not very interesting these days, so you can avoid it, but the examples are going to be same, right? yes, ma'am. So probably for social I think you can come up with some movie or something that is more interesting to read, but your example was also really good. Then exploring the why of the topic, then countering the topic, summarizing the topic. So you have to write sort of short notes for all of this while you are brainstorming, especially the examples. Argument plus example, write the argument that you're going to write, like in short you can write external internal factors for that Okay, ma'am. example, for that argument, and some example for it. Okay, ma'am. Any simple example that you can come with. Mm-hmm. Yes, ma'am. Okay. एक्सक्यूज मी मैम, जी जी रुपेश। पूछिए। जी हाँ, पूछिए इसमें रुपेश। जैसे आर्मी ऑफ प्रिंसिपल्स है, तो इसमें हम आर्मी को, जैसे आप बोले थे कि आर्मी को हम ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, तो एक तो आर्मी में हम ब्रेनस्टॉर्म ये कर सकते हैं कि जैसे हम्म अब सिंगल इंडिविजुअल का जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं आईपीएस का, तो उसको हम पहले डिफाइन कर देंगे कि आर्मी में हम्म वन इंडिविजुअल विल आल्सो बी कॉल्ड एज आर्मी बिकॉज ही इज कंपोज्ड ऑफ मतलब हम्म सो मेनी अदर थिंग्स। yeah, he is ठीक है, equipped with so many value, a big value system. राइट। सो Right. आर्मी ऑफ प्रिंसिपल्स हमारा जस्टिफाई हो जाता है वहां से कि हम्म प्रिंसिपल्स हम डिफाइन कर दिए, बट इसमें मेरे को ये सोल्जर्स में हम क्या क्या मतलब जस्टिफाई कर आर्मी ऑफ पाएंगे। सोल्जर्स में आई थिंक जो जो हार्ड वे ऑफ अचीविंग थिंग्स होते हैं, when you impose something, some violent ways, some form of punishment, hard ways of imposing certain things is army of soldiers. Not तो exactly fighting the war is army of soldiers, but hard way of imposing something, जैसे कि इसमें हम डिसिप्लिन ऐसे इम्पोज कर डिफाइन कर सकते हैं। सकते हैं क्या, जी। सोल्जर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब सोल्जर की वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोल्जर इज हम्म he has to abide by the discipline and the superior orders, and he is not required to have his conscience. That is the basic मतलब understanding of a soldier. he is not इसको हम allowed to ऐसे, have his conscience. या मतलब जैसे कि आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं या डिफेंस में या फिर मतलब कहीं पे भी जो सोल्जर हम समझते हैं, सो दैट इज मोर लाइक अ पर्सन Very, yeah, डिसिप्लिन, इज वेरी going by the रूल ड्रिवन। law. Yeah, यस going मैम, by the letter and law. तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। जी आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, बट इसको थोड़ा और क्लियरर टर्म्स में समझा सकते हैं। they are ठीक just है, they just go by the words and they just go by the laws. राइट मैम। एंड इसमें जो एक तियानमेन जो स्क्वायर का चाइना में एग्जांपल था, दैट इज आल्सो वेरी एक्ट, राइट। Yes, yes, yes. Because the तो principles of democracy won over the hard power of military army. ठीक, ठीक है मैम, थैंक यू। Principles of army of principles, which include principles like democracy, principles like self-government, other principles that you can come up with. So this army of principles is very broad term. For each example, there are going to be different set of army of principles, and there are going to be different set of army of soldiers. I hope I'm making sense to all of you. यस मैम। Yes, ma'am. For each example, there are going to be different set of army of principles. अलग principles होंगे हर example के, और अलग army of soldiers होंगे. Okay? ठीक है मैम, थैंक यू, हो गया।